नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो रे ए वीडियोटी रही आपण मानकर OSSTET एग्जाम 2021 रो क्वेश्चन एवं आंसर डिस्कशन क्लास टी आपण माने जदि OSSTET एग्जाम पई प्रिपरेशन करूछंती आपण मानकर ए वीडियोटी निश्चित हेल्पफुल रहइबो। OSSTET एग्जाम रे आपण मानकर CDP क्वेश्चन रही 50 टी ताहा आज आमे डिस्कशन करिबा। OSSTET एग्जाम आपण मानकर हाई स्कूल टीचर एलिजिबल पाई दिया जाय एवं 2021 मसीह रे OSSTET एग्जाम दुई थरो आसिला फर्स्ट एवं सेकंड दुई थरो ताहा मु आपण मानक पाखरे आज डिस्कशन करिबी। चलंतु स्टार्ट करिबा 2021 सेकंड फेज रे आस्थिबा OSSTET रो क्वेश्चन देखंतु एक नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस will bring out the best in students। ऑप्शन ए रही when students are required to reproduce facts as tested via multiple choice questions। ऑप्शन बी रही when the emphasis is laid upon positive correlation between test scores and students ability। ऑप्शन सी रही when the marks obtained and the position secured by the student in the class are the ultimate determinants of success। ऑप्शन डी रही when conceptual change and students alternative solutions are assessed through several different method of assessment। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन डी। यार सटीक आंसर होची ऑप्शन डी when conceptual change and students alternative solutions are assessed through several different methods of assessment। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which one of the following situations is illustrative of a child centered classroom। ऑप्शन ए रही a class in which the teacher dictates and students are asked to memorize the notes। ऑप्शन बी रही a class in which the textbook is the only resource the teacher refers to। ऑप्शन सी रही a class in which the behavior of students is governed by the rewards and punishments the teacher would given them। ऑप्शन डी रही a class in which the students are sitting in groups and the teacher take turns to go to each group। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द score based on statistical comparison of individual performance with the performance of others in that age group is dash। ऑप्शन ए रही इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ऑप्शन बी रही डेविएशन IQ। ऑप्शन सी रही फ्लूइड इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी रही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन बी डेविएशन IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु behavior is the movement of an organism or its parts in a frame of reference provided by the organism itself or by external objects or field of force। which theory of learning does it belong to। ऑप्शन ए रही स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ऑप्शन बी रही थ्योरी ऑफ सिंथेटिक बिहेवियर। ऑप्शन सी रही थ्योरी ऑफ कंडीशनल रेस्पॉन्स। ऑप्शन डी रही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन डी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अकॉर्डिंग टू होम ए शॉर्ट आंसर एसेट आइटम is one in which the examiner supplies the answer in one or two lines and is usually concerned with one central concept। ऑप्शन ए रही मार्शल एंड हॉल्स। ऑप्शन बी रही लिन एंड मिलर। ऑप्शन सी रही ग्रॉनलैंड। ऑप्शन डी रही NCF 2005। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन ए मार्शल एंड हॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु a grading system in which teachers base assessment decisions about an individual's work on comparisons with the work of peers is classified as। ऑप्शन ए रही नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग। ऑप्शन बी रही क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग। ऑप्शन सी रही कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग। ऑप्शन डी रही नॉन ऑफ दिज।
यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन ए रही इट्स डिजाइन इज एक्सप्लोरेटरी एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल। ऑप्शन बी रही इट सिक्स टू आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल्स। ऑप्शन सी रही इट मॉनिटर्स टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी रही इट इज ऑलमोस्ट अनऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी इट इज ऑलमोस्ट अनऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु टू व्हिच ऑफ कॉल्बर्ट स्टेजेस empathy and prosocial behaviors are most closely related। ऑप्शन ए रही प्री कन्वेंशनल इथिक्स। ऑप्शन बी रही कन्वेंशनल इथिक्स। ऑप्शन सी रही पोस्ट कन्वेंशनल इथिक्स। ऑप्शन डी रही नन ऑफ दिज। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी कन्वेंशनल इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स nuisance than a boy at the age of 14 if he tells with a childish lips he is called a baby, and if he answers in a grown up way he is called an impertinent। whose view is it? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी रही महात्मा गांधी। ऑप्शन सी रही श्री अरविंद। ऑप्शन डी रही एस राधाकृष्णन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु conditions involving a range of motor or coordination difficulties due to brain damage is known as। ऑप्शन ए रही एपिलेप्सी। ऑप्शन बी रही स्पास्टिसिटी। ऑप्शन सी रही सेरिब्रल प्लासी। ऑप्शन डी रही आर्टिकुलेशन डिजॉर्डर्स। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी सेरिब्रल प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is not a guideline for encouraging creativity। ऑप्शन ए रही ask students to support dissenting opinions। ऑप्शन बी रही use a class brainstorming session whenever possible। ऑप्शन सी रही give ungraded assignments from time to time। ऑप्शन डी रही do not reinforce a pattern of telling secrets। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी do not reinforce a pattern of telling secrets। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु according to psychoanalytic theory of motivation which of the following is true। psychoanalytic theory रो कोउटी आपण मानकर को ऑप्शन डी ठीक अछि। ऑप्शन ए रही मेन्स बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय हिज विल एंड दैट द विल इज मोटिवेटेड बाय इंटेलेक्चुअल इवैल्यूएशन। ऑप्शन बी रही मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन सी रही ह्यूमन बिहेवियर इज इंस्पायर्ड बाय द डिजायर्स लाइंग concealed in the unconscious and subconscious mind of the individual। ऑप्शन डी रही emphasized that motivation to work is rotated from psychological to self actualization need। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी human behavior is inspired by the desires lying concealed in the unconsciousness and subconsciousness mind of the individuals। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इज ए वे फॉर फोर्सिंग इंडिविजुअल स्कूल्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंस टू द चिल्ड्रन अंडर देयर jurisdiction was the view of dash। ऑप्शन ए रही मालेन। ऑप्शन बी रही हाउसमैन। ऑप्शन सी रही कांडोली। ऑप्शन डी रही हालिंगर। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी कांडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु in which type of educational management teachers get proper scope for evaluating the assignments entrusted upon them। ऑप्शन ए रही क्रिएटिव मैनेजमेंट। ऑप्शन बी रही लाइज फेयर मैनेजमेंट। ऑप्शन सी रही डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ऑप्शन डी रही डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट।
यार सटीक आंसर हो ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द प्रॉम्प्टिंग मेथड ऑफ मेमोरी टेस्टिंग इज क्रिएटेड बाय ऑप्शन ए रही एच मोन्स्टरबर्ग, ऑप्शन बी रही एच एविंगस, ऑप्शन सी रही एफरसिस, ऑप्शन डी रही फॉलमेन। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु in which phase a child cannot solve a problem alone but can be successful under adult guidance or in collaboration with a more advanced peer। ऑप्शन ए रही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रही जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी रही इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी रही मेटा कॉग्निशन। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु continuous and comprehensive evaluation emphasizes option A रही ऑप्शन ए हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड recorded and improved upon, ऑप्शन बी रही continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning, ऑप्शन सी रही फाइन ट्यूनिंग of test with the teaching, ऑप्शन डी रही redundancy of the board examination। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए हाउ लर्निंग कैन बी observed recorded and improved upon। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which assessment involves students in the collection and evaluation of materials to be included for examination। ऑप्शन ए रही चेकलिस्ट, ऑप्शन बी रही पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी रही रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी रही रुब्रिक। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which part of the brain is involved in higher cognitive process। ऑप्शन ए रही सेरिबेलम, ऑप्शन बी रही सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी रही मिड ब्रेन, ऑप्शन डी रही पोन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is not a characteristic of critical pedagogy। क्रिटिकल पेडागोजी आपण मानकर कौ ऑप्शन टी कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे। ऑप्शन ए रही टू एम्पावर स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू हेल्प देमसेल्व्स, ऑप्शन बी रही टू subjugate students by operating, ऑप्शन सी रही टू प्रमोट इनक्रिप्शन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ऑप्शन डी रही टू सेंटर इट्स प्रैक्टिस ऑन कम्युनिटी एंड कोलाबोरेशन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु although approximate chronological age are attached to the stages children pass through them at different rates, whose theory of development help us to understand these statements। ऑप्शन ए रही रॉबर्ट एस सियर, ऑप्शन बी रही भाइगोट्स्की, ऑप्शन सी रही पियागेट, ऑप्शन डी रही इरिक्सन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी पियागेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु a child reasons you do this for me and I will do that for you, in which stage of Kohlberg's moral reasoning would this child fall। ऑप्शन ए रही द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी रही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी रही द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी रही द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ongoing process of arranging information and experience into mental system or categories is known as, ऑप्शन ए रही assimilation, ऑप्शन बी रही accommodation, ऑप्शन सी रही organization, ऑप्शन डी रही equilibrium। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी organization। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु all of the following promote assessment as learning accept, ऑप्शन ए रही टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, ऑप्शन बी रही जेनरेटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चेंजेस, ऑप्शन सी रही टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, ऑप्शन डी रही टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which one of the following is a good example of learning of a problem solving task till the students are able to do it by themselves? Option A ରହିଛି offering a reward for solving the problem quickly. Option B ରହିଛି telling them that they can do it by trying again and again. Option C ରହିଛି providing a half solved example. Option D ରହିଛି telling them they cannot go home till they solve the problem. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଏ ହାଲ୍ପ ସଲ୍ଭ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ The following are the main objectives of International Conference on Educational Planning held at Paris in 1968 except option A ରହିଛି to examine critically the experiences of educational planning over the past 10 years. Option B ରହିଛି to assess major attendance and problem with which educational planning is likely to have to deal in the next 10 years. Option C ରହିଛି to assess cooperative learning groups and difficulties of implementing multi-age education. Option D ରହିଛି to develop practical guidelines for helping individual nations. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଟୁ ଏସେସ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ There should be more varied modes of assessment beyond the examination hall. Paper, pencil test was the recommendation of NEP 2020, NCF 2005, NPE 1986. Option D revised NPE 1992. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ବି NCF 2005। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ Which of the founder of critical pedagogy? Critical pedagogy ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଲ ଫେରେ, ଅପସନ୍ ବି ପଲ୍ ୱିଲ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଇରାସର, ଅପସନ୍ ଡି ସେଲେ ଷ୍ଟେନବର୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପଲ ଫେୟାରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ Rousseau's theory on adolescence was criticized by the psychologist because Option A ରହିଛି it was not purely philosophic in nature. Option B ରହିଛି it was not based on observation and experiments. Option C ରହିଛି he was a devoted parent. Option D ରହିଛି he did not analyze the self expression of children. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ବି it was not based on observation and experimentation. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ which of the following is a guideline for the teachers to deal with the learning disabled students? Option A ରହିଛି breaking assignments into very small steps. Option B ରହିଛି make sure students are being reinforced for their success. Option C ରହିଛି work on the learning problem directly. Option D ରହିଛି all of the above. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ଡି all of the above. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ A scale with a set of points which describe varying degrees of the dimension of an attribute under observation is known as option A ରହିଛି aptitude scale, option B ରହିଛି rating scale, option C ରହିଛି option C attitude scale, option D ରହିଛି questionnaire and pseudals. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ବି rating scale. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ According to Piaget, the ability to infer a relationship between two objects based on knowledge of their relationship with a third object developed at which stage? Option A ରହିଛି sensory motor, option B ରହିଛି pre-operational, option C ରହିଛି concrete, option D ରହିଛି formal operational. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ସି concrete operational. Whose name is strongly associated with the apparatus of puzzle box? Option A ରହିଛି Skinner, option B ରହିଛି Pavlov, option C ରହିଛି Thorndike, option D ରହିଛି Tolman. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ସି Thorndike. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ NCTE as a statutory body came into existence in purposes of the NCTE Act 1993 on the dash. Option A ରହିଛି 17 August 1993, option B ରହିଛି 7 August 1995, 5 September 1995, option D ରହିଛି 10th December 1994. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ
ऑप्शन बी 7 August 1995। नेक्स्ट देखंतु द एसे टेस्ट proposes relatively low validity and reliability because of the following factors accept। ऑप्शन ए रही इट कैन बी assessed only by a teacher or competent professionals। ऑप्शन बी रही इट मे नॉट प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द comprehension level of the learner। ऑप्शन सी रही द learners focus on learning broad concept and articulating relationship। ऑप्शन डी रही गुड verbal ability even in the sense of relevant point। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन सी द लर्नर फोकस ऑन लर्निंग बोर्ड कॉन्सेप्ट एंड आर्टिकुलेटिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रही क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन लर्निंग। ऑप्शन बी रही लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन सी रही डेवलप पर्सनल सोशल स्किल्स। ऑप्शन डी रही मिस्टेक्स द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन सी डेवलप पर्सनल सोशल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु who has suggested that people are motivated by a hierarchy of needs beginning with basic psychological equipment and moving up to the need for self fulfillment। ऑप्शन रही जे अटकिंसन। ऑप्शन बी रही किली। ऑप्शन सी रही मास्लो। ऑप्शन डी रही बी ओनर। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन सी मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु characterization by value which is one of the objective of Bloom's taxonomy comes within which domain। ऑप्शन रही कॉग्निटिव। ऑप्शन बी रही अफेक्टिव। ऑप्शन सी रही साइकोमोटर। ऑप्शन डी रही नन ऑफ दिज। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन बी अफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is a physical or material resource for education। ऑप्शन रही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन बी रही स्पॉन्सरशिप। ऑप्शन सी रही अलुमिनी। ऑप्शन डी रही अंडोमेंट्स। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन बी स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन एमसीक्यू आइटम द प्रॉब्लम पार्ट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए रही डायरेक्शन। ऑप्शन बी रही फॉलियस। ऑप्शन सी रही स्टेम। ऑप्शन डी रही डिस्ट्राक्टर। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन सी स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is the main objectives of continuous assessment। ऑप्शन ए रही to find out the extent to which the objectives have been achieved। ऑप्शन बी रही to discover how for the learning experiences in the classroom have provided effectively। ऑप्शन सी रही to learn how successfully the aims of education have been fulfilled। ऑप्शन डी रही to help the learners to understand their progress in learning। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन डी to help the learners to understand their progress in learning। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु what do you mean by rule easy method। ऑप्शन ए रही टीचिंग और लर्निंग by moving from specific examples to general rules। ऑप्शन बी रही टीचिंग और लर्निंग by moving from general principle to specific example। मेकिंग इमेजिनेटिव लीड्स टू करेक्ट perceptions। ऑप्शन डी रही टीचर्स प्रेजेंट मटेरियल इन कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन डी ऑप्शन बी टीचिंग और लर्निंग बाय मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल। रोल ऑफ टीचर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी इज आर। ऑप्शन ए रही कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन बी रही प्रमोट गुड सिटीजन क्वालिटी फॉर फ्यूचर सोसाइटी। ऑप्शन सी रही डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मोटिवेशन इज द स्टिमुलेशन ऑफ एक्शंस टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स where previously there was little or no attraction to that goal। This definition was given by ऑप्शन ए रही डब्ल्यू ए किली। ऑप्शन बी रही टी डब्ल्यू अटकिंसन। ऑप्शन सी रही एफ जी मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी रही एच डब्ल्यू बेर्नार्ड। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन डी एच डब्ल्यू बेर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु organizing pre-service and in-service training of teachers develop and disseminate innovative educational teaching techniques and practices are the objectives of which organization। NCTE नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन ए NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु
Which of the following is not a characteristic of blueprint? Blueprint ର ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ ଅପସନଟି characteristics ନୁହେଁ? ଅପସନ ଏ ରହିଛି weightage are given to objectives and contents. ଅପସନ ବି ରହିଛି weightage to form of questions in term of marks. ଅପସନ ସି ରହିଛି a two dimensional chart. ଅପସନ ଡି ରହିଛି it produce a link between test items and paper setters policy decision. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ ଡି, it produces a link between test items and paper setter policy. Next question ଦେଖନ୍ତୁ, which of the following is a benefit of peer assessment? peer assessment ର benefit କୋଉ ଅପସନଟି? ଅପସନ ଏ ରହିଛି it can assign in depending the student's own perception. ଅପସନ ବି ରହିଛି it helps narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what actually occurs. ଅପସନ ସି ରହିଛି it helps students towards understanding the observation process. ଅପସନ ଡି ରହିଛି it makes a student to become more independent learner. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ ବି, it helps narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what actually occurs. Which of the following is not a guideline for the teachers to develop problem solving qualities of learners? Option A ରହିଛି ask the student if they are sure they understand the problem. Option B ରହିଛି encourage attempts to see the problem from different angles. Option C ରହିଛି pose a question and let students try to find the answer. Option D ରହିଛି teach heuristic. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, pose a question and let students try to find the answer. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ରହିଛି ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. According to MC Douglas, a view negative self-feeling is associated with which of the following instinct? ଏହାର ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ସବମିଶନ୍, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଆସେପ୍ସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ରେପୁଲେସନ୍. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସବମିଶନ୍. ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ. ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ. ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର OSSTET ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିବେ. ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.